described the ballad in my previous video, and this time I am present with ode. It is very important for HTET, for SSC screening, UP TGT PGT, Bihar STET and DSSB. All the TGT PGT exams, 1 and 2 questions would be based on this, and sometime more than 1 or 2 questions. Okay, so let's start ode. Ode typically it is originated to Greek originated. तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि ओड का ओरिजिन क्या है, तो वो इट इज ओरिजिनेटेड इन ग्रीक. और लिरिकल स्टेंजा, इट इज अ लिरिकल स्टेंजा रिटन फॉर प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग एन इवेंट और इंडिविजुअल. ये जो लिखा जाता है वो किसी को प्रेज करने के लिए, किसी इवेंट को ग्लोरीफाई करने के लिए, किसी इंडिविजुअल को ग्लोरीफाई करने के लिए ये चीजें ये जो पोएट्री फॉर्म है वो लिखी जाती है. ओके, नेक्स्ट वन इज सो नाउ क्लासिकल ओड. सबसे जो ओल्डेस्ट वर्जन है ओड का वो क्लासिकल ओड है, और इसके 3 पार्ट होते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं. दी स्ट्रॉप जो फर्स्ट पार्ट होता है, और उसके बाद दी इपोर्ट जो थर्ड पार्ट होता है, जिसको हम एंड पार्ट कहते हैं. पहले आप ये देखिए, फर्स्ट स्ट्रोफी फर्स्ट पार्ट, आफ्टर दैट सेकेंड वन इज एंटीस्ट्रोफी जो आपका जो टर्निंग बैक, टर्निंग एंटीस्ट्रोफी मीन्स की स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चंस कुछ रेज किया होता है, उसके फिर उसी पॉइंट पे जाना, जो बीच का जो पोर्शन होता है दैट इज एंटीट्रोफी. एंड जो जनरली कोरस, बाय द कोरस, तो कई बार क्वेश्चन ये आता है एंटीस्ट्रोफी जनरली इन द ओड इज संग बाय विच कोरस और बाय द पोएट, और इस तरीके से ऑप्शन दिया जाएगा. तो आपको जो ऑप्शन टिक करना है वो कोरस टिक करना है. After that, last portion is the epode, third part, that is the end part of the ode. Okay, let's move towards the next. 3 typical forms होते हैं ode के: पिंडारिक ode and Horatian ode and irregular ode. जो पिंडारिक ode होता है जो पिंडार के स्टाइल में, उसके बाद Horatian जो होरेस से इंस्पायर्ड है, एंड irregular ode जो इन दोनों को, ये दोनों स्टाइल जो फॉलो नहीं करता है उसको हम irregular ode कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ ओड. जो सबसे कई बार ये जो सैरोन, जो अभी मॉडर्न ओड राइटर जो 2013 में पुलिट्जर प्राइज, इसके क्वेश्चंस भी आ चुका है. और ओड टू डॉट ये जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना है. नेक्स्ट इज थॉमस ग्रे. थॉमस ग्रे की इंपॉर्टेंट ओड है, ओड ऑन स्प्रिंग, ओड ऑन डेथ ऑफ कैट एंड ओड ऑन डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट, दी प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, पिंडारिक ओड. ये याद रखना, कई बार ये आता है कि प्रोग्रेस ऑफ पोएसी कौन सा ओड है, होरेटियन ओड है या पिंडारिक ओड है, और 1-2 ऑप्शन दे दिया जाएगा तो पिंडारिक ओड है. बार्ड इज ऑल्सो पिंडारिक ओड एंड फैटल सिस्टर इज ऑल्सो पिंडारिक ओड. दिस इज इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर इट. ओके, नेक्स्ट वन इज जॉन कीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट जो है, जिसका ओड टू ग्रेसन अर्न आपको जरूर आपको ध्यान से पढ़ना है. ओड टू नाइटिंगेल है, ओड टू मेलैंकोली, ये तीनों इंपॉर्टेंट ओड आपको जरूर एक बार पढ़ना है. एस टी कॉलरेज, ओड टू डिजेक्शन, ये याद रखना है. उसके बाद वर्ड्सवर्थ में आपके ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये चेक करना है. ओड टू ड्यूटी, पीवी शैली, नेरूदा, जॉन डन, शेक्सपियर एंड एलन टेट. प्लीज रिमेंबर, प्लीज गो थ्रू द विकिपीडिया, ओनली विकिपीडिया पे जाइए आप, और इनके डिटेल्स जो ओड हैं इसके आप जरूर आप इसको चेक कीजिए. और मैं अभी जो है नेक्स्ट अभी जस्ट विद इन 2 मिनट जस्ट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट ओड, top 10 ode. Now I will discuss some top 10 ode and its publication date and its important quotations. Okay, so let's start list of some important odes. So first important ode is Ode on Solitude, written by Alexander Pope, and type of ode is Horatian. It is very important, published in 1709. ये जो information आपको याद रखना है. और इसका जो line है वो है blessed who can unconcerned alive find hours, days and years slide soft away. Ode to Duty, written by William Wordsworth, and Horatian. This is the type of ode. Horatian तो क्वेश्चन ऐसे आता है, Ode to Duty is which type of ode? The Horatian ode, published in 1807. This is the line you must remember. Ode to the Confederate debt, Ellen Tate. It is very important, and it is also Horatian ode and published in 1928. What shall we say who have knowledge? Very important quotation this.
Dejection and ode written by S.T. Coleridge, and type is Pindaric ode published in 1802. O lady in this van and her place moved. Ode to a nightingale. इस पोएम को मैं आपको बोलूंगा ओड को बहुत एक वर्ड्स आप इसको पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम टीजीटी पीजीटी का आता है, ये ओड टू नाइटिंगेल इज वन ऑफ द फेवरेट ओड फॉर एग्जाम सेटर। John Keats, and it is a Horatian type of ode, and it is published in 1819. So this is one I have just mentioned the one single quotation, but you can go through the all complete one. Ode on Grayson on this I also suggest, please go through it very, and this is one of the irregular ode, तो इसको आप पढ़ लेना, ये irregular ode है, 1820 में पब्लिश हुआ था। Bard Pindaric ode, थॉमस ग्रे ने लिखा है इसको। Pindaric ode 1757 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद Ode to the West Wind, P.B. Shelley, and Irregular Ode 1820 published, and Trumpet of Prophecy of O Wind, and Ode to Intimations of Immortality, William Wordsworth. It is a type of Pindaric ode published in 1807. Ode to Autumn, John Keats, Horatian type of ode, and 1820 published in 1820. Okay, so now let's start some MCQ questions. So John Keats' Ode on a Grecian Earth is not what? It is not a classical ode. Okay, जो स्टार लगा हुआ है वो आपका इसका आंसर है। Next question, let's start. In ancient Greece, odes were designated to be read out loud in public settings. तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए बहुत ही क्विकली मैं कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड एडवाइस फॉर राइटिंग एन ओड, तो इसका आंसर है एक्सैजरेट योर फीलिंग्स। आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। क्लासिकल ओड इज अ क्लासिकल पोएम इज एन एयूलॉजी एंड प्रेजेस समवन, ये दोनों इसका आंसर है ए एंड सी। ओके, विच स्टेंजा फॉर्म डिड शैली यूज इन हिज फेमस पोएम ओड टू बेस्ट फ्रेंड, तो इसका जो इंपॉर्टेंट हो तेरजा रेमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, सो मेनी टाइम्स इट हैज कम इन द एग्जामिनेशन, वेरियस एग्जामिनेशन। ये आपका हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, दिस इज इमोर्टैलिटी ओड। इसका जो आंसर है ये इन 1820 इट हैड ओनली 1 to 4 stanzas 1 to 4. Okay, this one is correct. I just forgot to put on the star here, but the answer is stanza 1 to 4. Next question is, in which work do you read beauty is truth? So obviously you all know that Ode to Grecian, on which of the following poems described or celebrate to apocalyptic regeneration of the humanity? So this one is the answer of this one is all but D, means all but D means these all, and this one is not. Okay, so this one also, and this one also. Okay, so this one is the answer, and thank you so much. And for next video I will be discussing some more important topic on form of literature. Thank you so much.